Hello students, welcome to Infallible Study. This is lecture number 2.4. It means chapter number 2 and the lecture number 4. If you are watching this video first time, then you must go to my first video and start from beginning. The videos are not too long, so you can revise your entire MCQs question in very short time. And I'm definitely gonna say these questions are more important for a board exam. So stay with us. Let's start our class. So in this question, the graph of y is equal to fx. y is equal to fx is given below. हमारे पास जो ग्राफ दे रखा है वो दे रखा है y is equal to fx का. How many zeros are there for fx? तो fx के लिए कितने zeros होंगे? फर्स्ट अंडरस्टैंड करने वाली बात ये है कि अगर यहाँ पे x गिवन है तो ये जो ग्राफ है वो x एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे कट कर रहा है, दैट विल बी द नंबर ऑफ जीरोस. गॉट इट? बट अगर यहां पे fy है तो हम ये चेक करेंगे कि जो ग्राफ है वो y एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे कट कर रहा है. गॉट इट? उतने ही क्या हो जाएंगे, उस पॉलिनोमियल के जीरोस हो जाएंगे. सो हमारे पास इस केस में पूछा क्या है, y इज इक्वल टू fx. तो हमें देखना है जो ग्राफ है वो x एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे कट कर रहा है. सो हियर इज ओनली वन पॉइंट. सो हाउ मेनी जीरोस आर देयर ऑफ fx? तो कितने जीरोस होंगे? ओनली वन जीरोस, क्योंकि ये ग्राफ जो है वो x एक्सिस को सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे ही क्या कर रहा है, कट कर रहा है. So the number of zeros will be only 1. Now let's move to the next question. This is question number 9 and it says that group of the polynomial px is equal to px square plus 4x minus 4 is given below. हमारे पास जो ग्राफ है वो इस polynomial का है. This graph. Find the value of p. और हमें यहाँ पे जो p वेरिएबल है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है. सो अगर इस ग्राफ को ध्यान से देखें तो ये ग्राफ सिर्फ और सिर्फ x एक्सिस पे कट कर रहा है. इट मीन्स अगर इसके जीरोस भी गिवन है तो सिर्फ और सिर्फ एक जीरोस गिवन है, दैट इज x की वैल्यू. और यहाँ पे देखा जाए दैट इज 2 और 0 लिखा हुआ है. सो द x विल बी 2 एंड y विल बी 0. The value of x will be 2 and the value of y will be 0. And here in this polynomial the variable is x. So we will put 2 on the place of x. So let's do it. Our equation is px is equal to px square plus 4x minus 4. So p in bracket 2 is equal to p 2 square plus 4 multiplied by 2 minus 4 is equal to 0. So that 4p plus 8 minus 4 is equal to 0. So the 4p plus 4 is equal to 0 because 8 minus 4 it gives 4. So 4p is equal to minus 4 and the p is minus 4 upon 4. So that p is equal to minus 1 and the value of p will be minus 1. So ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा था, ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा था? ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा था x की वैल्यू बिकॉज y इज इक्वल टू 0. और ये ग्राफ x एक्सिस को सिर्फ एक पॉइंट पे ही कट कर रहा था और y एक्सिस पे नहीं कट कर रहा था बिकॉज दिस इज ओनली लाइन, दिस इज नॉट इंटरसेक्टिंग द y एक्सिस. सो हम यहाँ से x की वैल्यू ले सकते हैं और y की वैल्यू 0. सो उसको पुट करने का कोई मतलब होता नहीं. सो x की वैल्यू को हम कितना रख सकते हैं 2 और यहाँ पे x की वैल्यू को जब हमने 2 फाइंड पुट किया सो वी गेट p इज इक्वल टू -1 एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ p -1 and you will get 1 mark successfully. Now let's move to the next question. This question says that if px is equal to ax square plus bx plus c then minus b upon a is equal to. हमारे पास एक पॉलिनोमियल गिवन है that is px is equal to ax square plus bx plus c और हमें वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, माइनस b by c की, माइनस b by a की, सॉरी. सो द पॉलिनोमियल इज px is equal to ax square plus bx plus c.
सो माइनस बी बाई ए की वैल्यू क्या होगी? इस इक्वेशन में ओनली वेरिएबल्स हैं, कोई भी हमारे पास नंबर्स नहीं है। सो इट मीन्स अगर इसकी वैल्यू फाइंड भी करें तो जीरो नहीं आ सकती, बिकॉज जीरो इज अ नंबर एंड इन दिस इक्वेशन देयर इज नो नंबर. So according to this, the option B will be also wrong. We have now two choices, that is C and D, product of zeros and sum of zeros. According to equation, according to polynomial, what is the sum of zeros? Sum of zeros is equal to minus B by A. This is the formula. And minus B by A, it means what is the value of B in this polynomial? The value of B is exactly B. So that B and minus sign will be here. And what is the value of A according to this equation? The value of A according to this equation is A. So sum of zeros, the formula of sum of zeros will be minus B by A, and whenever they put the value of B and A according to this polynomial, we get minus B by A. And this is the exactly that this question asked. What is minus B by A? So the minus B by A is sum of zeros. What is minus B by A? That is sum of zeros. So option number D is the correct one and you will get 1 mark successfully. Now let's move to the next question. So in this question, if bx is equal to ax square plus bx plus c, हमारे पास एक polynomial है, that is px is equal to ax square plus bx plus c and a plus b plus c is equal to 0. और हमारे पास क्या गिवन है? That is a plus b plus c is equal to 0. Then 1 0 is, कोई एक 0 हमें फाइंड करना है. We need to find 1 0 of this polynomial in case of a plus b plus c is equal to 0. So हमारे पास कोई भी zeros नहीं है और हमें कोई भी पॉलिनोमियल्स की हिंट वेरिएबल्स की वैल्यू भी नहीं पता है. सो इस क्वेश्चन को टैकल करने के लिए हम सबसे पहले इस पॉलिनोमियल में x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे. सो लेट्स डू इट. पुट x इज इक्वल टू 1. सो इक्वेशन क्या हो जाएगी? p1 इज इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस b1 प्लस c इज इक्वल टू 0. अगर इसकी वैल्यू 0 आ जाती है, इट मीन्स x इज इक्वल टू 1 इज अवर राइट ऑप्शन. सो a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0 बिकॉज 1 टू द पावर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाइड बाय b, दैट इज b एंड c. और इसकी वैल्यू क्या गिवन है हमारे पास? दैट इज 0. सो दैट 0 इज इक्वल टू 0. इस केस में now we can say that 1 0 of this polynomial is 1. Now we have the 1 zeros, but 1 is the not option in A, B and C and D. A, B, C, D में से कोई भी option 1 नहीं है. So we need to find the second zeros to match the option between these 4. So we have two zeros, that is alpha and beta. So the value of alpha now we get as 1. We need to find the value of beta. So let's do it. We have a formula, that is product of zeros, that is alpha beta is equal to c by a. I hope you all know this formula. Sum of zeros, that is minus b by a, and product of zeros, that is c by a. Now we have the value of alpha, that is 1. So 1 multiplied by beta, and what is the value of c and a? The value of c, that is exactly c, and the value of a, that is exactly a. So the value of beta will be c by a. Now we have two zeros, that is alpha and the beta. The value of alpha is 1 and the value of beta, that is c by a. Now let's see the example, that is C is our answer, that is C by A, because option number 1, that is alpha's value, is not in our option. So we will consider the value of beta and you will get 1 marks successfully. So I hope you understand. अगर कभी भी जीरोस की वैल्यू नहीं गिवन होगी, एक पॉलिनोमियल होगा जिसमें कोई जीरोस फाइंड करना होगा और एक कंडीशन दी होगी, लाइक
a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। सो हम करेंगे क्या, उसी पॉलिनोमियल में x की जगह हम 1 पुट करेंगे। अगर 1 में ये सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती देन वी विल पुट -1 देन 2 एंड सो ऑन। सो वैल्यू पुट करने के बाद बोथ साइड 0 आ गया, इट मींस द 1 इज द zeros ऑफ दिस पॉलिनोमियल एंड 1 इज नॉट इन द ऑप्शन। सो वी विल पुट द फॉर्मूला ऑफ प्रोडक्ट ऑफ zeros, दैट इज अल्फा मल्टीप्लाइड बाय बीटा इज इक्वल टू c by a, and the value of alpha we have find out, that is a, the value of beta, that is c by a. Now we get our answer. I hope you understand. Now let's move to the next question. Now let's see this question. Given that one of the zeros of the cubic polynomial, यहाँ पर हमारे पास इस बार क्या है, एक cubic polynomial है. It means the variable, sorry, the degree of variable will be 3. So the cubic polynomial जो है वो ax power 3 plus bx square plus cx plus d. This is our cubic polynomial is 0. Given that one of the zeros, एक जीरो जो है वो कितना है हमारे पास 0. So suppose cubic polynomial है, it means we have 3 zeros because the degree of variable is 3. So we have 3 zeros like alpha, beta and gamma. So the value of alpha in this case 0 because it is given. The product of two other zeros is, हमारे पास पूछा यह है कि दो other zeros के प्रोडक्ट कितने होंगे, जो दो two other products हैं. It means we need to find beta, gamma. We have three variables, that is alpha plus alpha and beta and gamma, and given that the value of alpha, you can take any other variables, the value of variables, that is beta is equal to 0 or gamma is equal to 0, but in this case I take the alpha is equal to 0. So हमें find करना है two other variables के, यानी zeros के, two other zeros के product क्या होंगे. So we have a formula like alpha beta plus beta gamma and gamma alpha is equal to c by a. Let's put the value of one zeros, that is 0. Alpha is equal to 0. So in this case 0 multiplied by beta plus beta gamma plus gamma multiplied by 0 and c upon a. It will be 0 plus beta gamma and it will also be 0. So c by a. According to this 0 and 0 we can left it, so beta gamma will be c by a. And got it, this is the product of two other variables, that is beta and gamma. So we have the value of c by a, and the two other products की जो value पूछी थी इसने, the product of two other zeros is c by a, and option number C is the correct one, and you will get 1 mark successfully. I hope you understand. क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन में एक पॉलिनोमियल गिवन थी, दैट इज क्यूबिक पॉलिनोमियल, और उसके एक जीरोस की वैल्यू पता थी, दैट इज 0, और अदर टू जीरोस के प्रोडक्ट की वैल्यू पूछी थी. सो हमने अल्फा इज इक्वल टू 0 ले लिया, और गामा और बीटा के लिए हमने क्या किया, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा एंड द गामा अल्फा विल इक्वल टू c by a, जहां पे अल्फा की वैल्यू पुट करने के पास हमारे पास बीटा गामा हमें क्या मिल गया, c by a. Now let's move to the next question.